Auzubillahiminashaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. How are you all? I hope you will be fine, inshallah. So recently when the area in Iceland hit under the volcanic eruption. So now we will come to know about the volcanism, about the volcanic history in the Iceland. Also, we will discuss that how many active volcanoes in this Iceland. Iceland basically is known as the place of ice, where everywhere ice, snow, etc. But do you know it's also the home of many active volcanic zones? Yes, it's obvious. Iceland is considered as the home of almost 32 active volcanic zones. Some of are dead, some are considered as active volcanic. It's roughly estimated that almost 130 volcanic islands are existed in this Iceland. All Icelands are dead? No, it's not like that. Basically, if we talk about the types of volcanism, so almost three types of volcanoes are very common: active, dormant, and dead volcanoes. But the dead volcanoes is really a dead? No, we never can say that dead volcanoes is really dead. हिस्ट्री में जितने भी वोल्केनोस को देखा जाए, आप वोल्केनोस के बारे में कभी भी ये नहीं कह सकते कि एक वोल्केनो डेड हो चुका है. रीज़न इज़ कि वोल्केनिज्म कभी भी किसी भी जगह से अपीयर हो सकती है. इसका रिसेंट सबूत, रिसेंट प्रूफ हमें जो सबसे पहले मिला वो यहीं पर आइसलैंड में ही मिला. In Iceland, there was a volcano which was dead in almost previous 8th century. 800 years are passed and this volcano was dead. But what happened? Suddenly हमने देखा in 2021 in that area volcano bursted. So it's proof that we can never say that volcano is dead. In the area of Reykjanes Peninsula, Reykjanes volcano, it's estimated that after the 800 years of quiet, now the Reykjanes Peninsula reawakened in 2021. यानी कि रेकेजेंस का जो एरिया जहाँ पर अभी भी रिसेंटली भी वोल्केनिक इरप्शन हुई है, ऑलमोस्ट 800 ईयर से डेड कंसीडर किया जाता था, बट वंस अगेन क्या है कि वो रीअवेकन हो चुका है. Several volcanic eruptions started in this region. Series of volcanic eruption also started at the end of the 2023, now in the start of the 2024. So basically, if we talk about the reason of these volcanic eruptions, then what is the reason of these volcanic eruptions? Why the volcanism is very common in the Iceland? As 2 days before, we noticed the skyline of Reykjavik is against the backdrop of orange color due to the molten lava, especially in the town of Grandvik, Western Iceland on March. आइसलैंड की वजह से ये एस्टिमेटेड किया गया, हमने ये चीज़ नोटिस की कि वहाँ पर जो आसमान का कलर है, स्काई का कलर है, वो भी कंप्लीट चेंज हो चुका है. सबसे बड़ी बात जो ये है कि यहाँ पर फ्लो बहुत तेज़ था. ठीक है, लावा का जो भी फ्लो है बहुत रैपिड था. फ्लो जितना रैपिड होगा उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं चीज़ों के वॉश आउट होने के. तो बेसिकली अब जान लेते हैं कि वाई दी volcanic activities are common, why the Reykjanes ridge is very common for volcanic eruption. So basically the area of Reykjanes Peninsula is located on the part of the mid-Atlantic plate boundary. Mid-Atlantic plate boundary where the Eurasian plate and the North American plate are moves away from each other. When they moves away from each other, then the area which is creating is known as the mid-Atlantic ridge. And the Reykjavik is above of this mid-Atlantic ridge. It's obvious when the plates moves away from each other, then it's creating the huge volcanic eruptions area. So there are more chances for the volcanic eruption. Now here it's also the question, if the area is Iceland where everywhere is snow and ice,
Then why the volcanic eruption takes place on the earth's surface? Guys, I already told you in my last contents that it's common, इट्स वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल। किसी भी जगह पर अगर स्नो है, आइस है, तो वो कहीं भी किसी भी जगह पर वॉल्केनिक इरप्शन को स्टॉप नहीं करेगी। वॉल्केनिक इरप्शन स्टॉप नहीं हो सकता, वॉल्केनिक इरप्शन होती है बिकॉज इसका डायरेक्ट लिंक ज़मीन के अंदर है। जब डायरेक्ट लिंक ज़मीन के अंदर है तो वॉल्केनिक इरप्ट तो होगी, हाँ, but it's also the reason and it's also the fact that when the lava magma will reach on the earth's surface due to the low temperature, due to the snow and ice, soon it will cool down. And also in Iceland regions there are many fissures, there are many geysers in that area. Even beneath the snow land we also found the hot geysers, warm water, because underneath the area included in the volcanic activities. So it's also the question, can we see the lava flowing, magma flowing on the earth surface in Iceland? Yes, you are allowed. इस बात की इजाज़त है, आपको ये अलाउ किया जाता है कि आप जाकर लावा मैग्मा फ्लो देख सकते हैं, बट क्या है कि वहाँ की कम्युनिटी की तरफ से यू आर अलाउड टू वॉच दीज लावा मैग्मा फ्लो, बट इफ़ दे आर अलाउड टू सी in Iceland, which is famous tourist places, with also the attraction of many tourists due to its ice, due to its snow, due to its glaciers, and also due to its volcanoes. Many of tourists are attracting in these places. So it was the short video in which I explained that why volcanism, volcanic activities is very common, and Iceland, as we know that Iceland is the home of 32 active volcanoes, almost 130 volcanoes, and in between 32 active volcanoes. So maybe we will see more volcanic activities. Just hope for best that it will never affect it. It will never disturb the other humans populations. But yeah, volcanic eruptions, एक्सट्रीम वोल्केनिक इरप्शंस कॉजिंग द मैनी इश्यूज। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, अगर ये वोल्केनिक इरप्शन नहीं रुकती है, वोल्केनिक इरप्शन बंद नहीं होती है, तो आइसलैंड की स्नो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। आइसलैंड की स्नो जितनी ज़्यादा मेल्ट होगी, सी लेवल उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, जो कि ज़्यादा डेंजरस है। सो रीज़न तो बहुत सिंपल है, मिड रिज जो क्रिएट होती है उस रिज की वजह से यहाँ पर common है। It's also estimated that every year there are almost 500 earthquakes takes place in the Iceland. Yes, there are 500. Intensity may be low, intensity will be less, intensity will be high. ठीक है, earthquake almost एक ईयर में 500 to 600 आ जाती है। इनकी इंटेंसिटी लो भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, मे भी कुछ ज़्यादा नुकसानदेह नहीं देंगे, बट क्या है कि यहाँ पर इस जोन में अर्थक्विक भी बहुत कॉमन है। वोल्केनिज्म और अर्थक्विक्स बात आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों फिनोमेना एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। अगर कहीं पर वोल्केनिज्म ज़्यादा होती है तो इट्स ऑब्वियस वहाँ पर अर्थक्विक के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। वी जस्ट होप फॉर इट दैट आवर अर्थ विल सेव फ्रॉम इट। वी कैन नेवर से दैट इट विल नेवर हैपन अगेन। ऐसा तो नहीं हो सकता, होंगे अर्थक्विक आएंगे, वोल्केनिज्म होगी, लेकिन वी जस्ट होप फॉर इट, वी जस्ट प्रे फॉर इट दैट वी ऑल विल सेव। Okay, so that's for today. For more amazing and interesting videos, stay tuned with this channel. Soon we will meet in another video. Till then, Allah Hafiz.